My dear students, just a review and we have to take the overview of the previous one as well. Basically, we were discussed about the spinal curvatures. Previously, we were discussed scoliosis. As there are the three types of the spinal curvature, first one has we were discussed as earlier, and second kyphosis we will discuss today, and lordosis that will be discussed in the next one. This was discussed जिसके अंदर scoliosis जिसमें इशू ये था कि जो बैक एंड पे वर्टिकली जो स्पाइन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास ये जो लेफ्ट और राइट बैंड आता है, वर्टिकली लेफ्ट और राइट बैंड है, इसको हम स्कॉलियोसिस का नाम देते हैं. इसके साथ हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था. And today we have to discuss about the kyphosis. My dear students, kyphosis is a spinal disorder in which an excessive outward curve of the spine results in an abnormal rounding of the upper back. The condition is sometimes known as round back, or in the case of a severe curve, it is called hunchback. Kyphosis can occur at any stage, but is common during adolescence. My dear students, basically, kyphosis is an exaggerated forward rounding of the backward. It can occur at any age but is most common in older women. Age-related kyphosis is often due to weakness in the spinal bones that causes them to compress or crack. Other types of kyphosis can appear in infants or teens due to malformation of the spine or wedging of the spinal bones over time. Mid-kyphosis causes few problems. Severe kyphosis can cause pain and be disfiguring. Treatment for kyphosis depend on your age and the cause and effects of the curvature. My dear students, you can look at the curves. जहां पर जो आपके पास आप देख रहे हैं, ये वाला जो हमारे पास है, दिस इज द नॉर्मल पोस्चर ऑफ द मैन. इसको आप देखेंगे जहां पर इसकी गर्दन के अंदर खाम है, and this is due to the spine disorder. This is also, and you can see here posture as well, and you can backward posture here. इसमें फॉरवर्ड हेड है, इसमें थोरेसिस काइफोसिस है, और जहां पर इसको लंबर लॉर्डिसिस कहते हैं, जिसवे बैक है. बट हमारा आज का बेसिकली जो कैफोसिस के ऊपर हम जो वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने ये बताना है कि इसकी रीजंस क्या हैं, ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इसके काजेस क्या हैं, और कैसे ओवरलुक किया जा सकता है, और क्या नुकसान आता है इसके. माय डियर स्टूडेंट्स, kyphosis is a spinal disorder, as I already said, in which an excessive outward curve of the spine results in an abnormal rounding of the upper back. The condition is sometimes known as
round back, as I said. Also, in the case of severe curve, it is called hunchback. Again, kyphosis can occur, as I already again going to repeat, at any age, but mostly it is common during adolescence. My dear students, in many cases and in the majority of the cases, kyphosis causes few problems and does not require treatment. Occasionally, a patient may need to wear a back brace or do exercise in order to improve his or her posture and strengthening the spine. In severe cases, however, kyphosis can be painful, cause significant spinal deformity, disfiguring, and lead to breathing problems. Patients Patients with severe kyphosis may need surgery to help reduce the excessive spinal curve and improve their symptoms. My dear students, if we are going to talk about the anatomy, your spine, any human spine we can say, is made up of three segments. Number one, when we are viewing this from the side, three segments of this natural curve. This is the C-shaped curve of the neck. C-shaped curve of the neck. This is called cervical spine and lower back is called lumbar spine or called lordosis. And the reverse C-shaped curve is the chest. Opposite C-shape is called kyphosis. This natural curvature of the spine is important. Number one, for balance, and the secondly, help us to stand upright. एक तो ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है और दूसरा ये है कि ये हमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने में हमारी मदद करता है. और सेकेंडली, इसके दो और पार्ट्स भी हैं जिसको हम करते हैं वर्टेब्रे और इनवर्टेब्रल डिस्क्स. वर्टेब्रे क्या है? Basically, the spine is made up of 24 small rectangular shapes bone. जी आपको जो नजर आ रही हैं, these are the small rectangular bones. These are called the vertebrae, which are stacked on the top of one another. Stacked upon one another throughout from top to bottom. These bones create the natural curve of your back. This is the normal spine. These bones create the natural curve of your back and connect to create a canal that protects the spinal cord. And what is the intervertebral disc? In between these vertebrae are flexible invertebral discs. These discs are flat and round and about a half inch thick.
In vertebral disc, cushion the vertebrae and act as a shock absorber when you walk or run. बुनियादी तौर पर ये हमारे पास यहाँ जो डिफरेंट आपको ये पता चलना चाहिए कि अगेन मैं ये बता दूं कि इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, ये जिनके ऊपर इस वक्त आपके पास लाइट मूव कर रही है, दिस इज कॉल्ड द वर्टेब्रे, ये बैक पर जो है, और ये जो आप राउंड शेप में नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं डिस्क्स, और दीज आर द क्वेश्चंस, और इनके दरमियान स्पेस है। जब हमारी बॉडी अप एंड डाउन होती है तो ये हमारे पास इनके जो दरमियान स्पेसेस है ये एक्सट्रैक्शन और कंप्रेशन का काम करती हैं और हमारी बॉडी के प्रेशर और बैलेंस को मेंटेन रखती हैं। My dear students, although the thoracic spine should have a natural kyphosis between 20 to 45 degree, postural or structural abnormalities can result in a curve that is outside this normal range. While the medical term for a curve that is greater than normal more than 50 degree is actually hyperkyphosis. The term kyphosis is commonly used by the doctors and the medical professionals to refer to the clinical condition of excessive curvature in the thoracic spine that leads to a rounded upper back. As you are seeing the different things that different postures that I have mentioned for you people, एक से ज़्यादा डायग्राम्स मैंने इसीलिए मेंशन किए हैं ताकि आपको आप बार बार इनको देखने से और डिफरेंट फिगर्स को देखने से आपके पास क्लैरिटी आ जाए कि what is the requirement to understand. Basically I mean requirement to understand. Kyphosis can vary in severity. In general, the greater the curve, the more serious the condition. जितनी कर्व ज्यादा होगी उतना ही प्रॉब्लम ज्यादा हो। हम ये तो इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि व्हाट इज द माइल्ड, व्हाट इज द मॉडरेट, व्हाट इज द सीवियर एंड व्हाट इज द प्रोफाउंड, बट द माइल्डर कर्व्स मे कॉज माइल्ड बैक पेन और नो सिम्टम्स एट ऑल, but the more severe curves can cause significant spinal deformity, defiguring, and results in a visible hump on the patient back. As you are seeing here, आपके पास यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर भी नजर आ रहा है, जहाँ पर भी आपको चीजें नजर आ रही हैं, और यहाँ पर आपको इसका फॉरवर्ड हेड जो है वो नजर आ रहा है, but this is a normal curve. And also this is one of the, this is a scoliosis, जी आपको डिफरेंस तीनों कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर नजर आ जाना चाहिए। देखें काइफोसिस जो है ये अप एंड डाउन बता रहा है कि कहाँ से अप है और कहाँ से डाउन है। जो हमारे पास स्कोलियोसिस है जो लेफ्ट एंड राइट है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, कि यानी ये यूं इसे सीधा होना चाहिए, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ये, लेकिन स्कोलियोसिस के अंदर ये लेफ्ट राइट है। लेकिन काइफोसिस के अंदर ये लेफ्ट राइट नहीं है, बट या तो ये इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है, इनवर्ड है आउटवर्ड है, इनवर्ड है आउटवर्ड है, इनवर्ड है आउटवर्ड। जैसे अगर आप पीछे वाली डायग्राम के अंदर देखते हैं, दिस इज जे काइफोसिस है, दिस इज काइफोसिस, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, ये हमारे पास आउटवर्ड है काइफोसिस। जब ये लोअर पोर्शन से इनवर्ड होगी तो लॉर्डसिस है, लेकिन
अगर ये सीधी नहीं है, लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है या राइट है, देन डिस्कोलिसिस है। अगेन आप देख सकते हैं, दिस इज आइडियल पोस्चर, कैफोटिक एंड लॉर्डोटिक पोस्चर। ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड को दोबारा से यहाँ पे आपके सामने रखा है। ये सर्विकल है, जैसे मैं पहले बता रहा था। ये जो मिड वाला पोर्शन थोरेसिस है, ये लंबर कहलाता है, और ये सैक्रम है। तो बेसिकली ये 4 पोर्शन आपके पास आपको सामने नजर आ रहे हैं। Now we have to discuss about the types of kyphosis. बुनियादी तौर पर we have more than 3 and several types of the kyphosis, but the medically the most prominent and the most common and the most diagnosed by the medical professional, there are the 3 one. Number 1 is postural kyphosis, second one the Schurzman kyphosis, and congenital kyphosis. Postural kyphosis आपके पास क्या है? Postural kyphosis, the most common type of the kyphosis, usually becomes noticeable during the adolescence. It is noticed clinically as poor posture or slouching, but is not associated with the severe structural abnormalities of the spine. The curve caused by postural kyphosis is typically round and smooth and can often be corrected by the patient when he or she is asked to stand upright. There is a flexibility in this case. A man can try to balance himself or herself. The curve caused by postural kyphosis is typically round and smooth and can often be corrected by the patient when he or she asks to stand up straight. And also, postural kyphosis is more common in girls than boys. This also is also noticeable. It is rarely painful, and because the curve does not progress, it does not usually lead to the problems in adult life. And the second one is Schurzman kyphosis. Schurzman kyphosis is named after the Danish radiologist. This is Danish radiologist who first described the condition. What? Like postural kyphosis, Schurzman kyphosis often becomes apparent during the teen years. However, Schurzman kyphosis can cause results in a significantly more severe deformity than postural kyphosis, particularly in thin patients जो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, वहाँ पर उनके यहाँ ज़्यादा इसको जो है वो नज़र आता है, ज़्यादा prominent हो जाता है. And also Schurzman kyphosis is caused by structural abnormalities in the spine. In a patient with Schurzman kyphosis, an X-ray from the side will show that the normal rectangular shape cerebral conjunctive vertebrae has more triangular shape. The irregularity shapes in the vertebrae causes the vertebrae to wedge together towards the front of the spine. प्रेस करता है फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ हिस्सा प्रेस करता है, जैसे आपने प्रीवियस शेप के अंदर देखा है. And this curve, mostly caused by the Schurzman kyphosis, is usually sharp and rectangular. It is also stiff and rigid. Unlike a patient with postural kyphosis, a patient with Schurzman kyphosis is not able to correct the curve by standing up right. इसमें सिंपली आपसे यही आपको बताता हूँ कि चलो पोस्टल के अंदर हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि अगर एक पेशेंट ट्राई करता है, कोशिश करता है, तो वो खड़ा हो सकता है, सीधा हो सकता है, लेकिन बट यहाँ पर शॉर्टमैन काइफोसिस के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है.
And the third one is congenital kyphosis. Congenital kyphosis is present at birth. It occurs when the spinal column fails to develop normally while the baby is in utero. The bones may not form as they should, or several vertebrae may be fused together. Congenital kyphosis typically worsen as the child age. अब यानी इंसान की जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो ज़्यादा इफेक्ट होगा और एज के बढ़ने के साथ जो ज़्यादा सीवियर भी होता जाएगा. And also patient with congenital kyphosis often need surgical treatment at a very young age to stop progression of the curve. Many times these patients will have additional birth defects that impact other parts of the body such as the heart and kidneys. और भी मल्टीपल इश्यूज जो हैं वो इन बच्चों को हो सकते हैं जिनकी वजह से इनके जो मसाइल जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं और इनके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं. तो ये तीन तरह के हमने जो है वो काइफोसिस, पोस्टल और शॉमैन और कंजेनिटल को डिस्कस किया है. इसके बाद हमारे पास ये है कि सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या इश्यूज हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं. The sign and symptoms of kyphosis, it's depending upon the causes and the severity of the curve. Mild, moderate or severe or the profound may be, but these 6 symptoms are the most common symptoms of the kyphosis. Number 1 is rounded shoulder. Number 2 is visible hump on the back, mild back pain, fatigue, spine stiffness, and tight hamstring, the muscles in the back of the thigh. These are the most observed symptoms of the kyphosis. And rarely with the passage of time, these curves progressive बढ़ती जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं और जिसकी वजह से जो मसाइल आते हैं. द नंबर 1 इज वीकनेस, numbness or tingling in the legs, loss of sensation, and the third one is shortness of breath और breathing difficulties, सांस लेने में मसाइल आते हैं और उसकी वजह ये होती है कि लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर से एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करती हैं. अब हमारे पास ये है कि इसकी काजेस क्या हैं, क्यों हमारे पास जो है ऐसा होता है, इशू क्या है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जो बढ़ रहा है. I found the 7 causes of the kyphosis. The number 1 is fracture. Broken or crushed vertebrae can result in the curvature of the spine. Mild compression fractures often don't produce noticeable signs or symptoms, but later on it's showing its effects. The second one is osteoporosis. Basically, this bone thinning disorder can cause spinal curvature, and especially if weakened vertebrae results in compression fractures. Osteoporosis is most common in older women and people who have taken corticosteroids for a long period of time. This is called corticosteroid for a long period of time. And the third one is disc degeneration. And my dear student, this is a soft circular disc act as a cushion between spinal vertebrae, as I shown to already in the picture. With age, these discs dry out and shrink, which often worsen kyphosis. Shrink हो जाती हैं with the passage of time और उनके दरमियान स्पेस कम हो जाती है
और डिफरेंट इश्यूज आने की वजह से डी शेपिंग और डीफॉर्मिंग जो है वो डिफिकरिंग पॉसिबिलिटी होती है। बर्थ डिफेक्ट्स हैं due to the not normally properly and normally development of the different organs, and in which spinal is the main thing. Sixth is the syndrome. Kyphosis in children can also be associated with certain syndromes such as Ehlers and Danlos syndrome and Marfan syndrome. These are belongs to the basically disorders of the bones. Last is the cancer and cancer treatment. And cancer is in the spine can weaken vertebrae and make them more prone to compression fractures, as can chemotherapy and radiation कैंसर ट्रीटमेंट, बिकॉज इनकी वजह से जो है वो ये बहुत ज़्यादा हड्डियों के ऊपर इफेक्ट करता है केमोथेरेपी, और जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल किसी भी पेशेंट को पेश आ सकते हैं. What are the complications that you people can you people mean any individual who have this issue, उसको क्या complications आ सकती हैं? I noted here 4. The number one is the breathing problems, as I already mentioned, that due to not the proper functioning of the lungs, because they don't have a proper shape and they cannot properly extract and expanse. दोनों में हमारे पास मसाइल था, कंप्रेशन और एक्सटेंशन, और उनके एक्सप्रेशन में फलने, यानी एक तो क्लोज होते हैं और फिर हमारे ऑक्सीजन को लेने के लिए वो दोबारा से एक्सटेंड होते हैं, तो उनमें मसला आता है. लिमिटेड फिजिकल फंक्शंस. Kyphosis basically is associated with weakened back muscles and difficulty doing tasks such as walking and getting out of chairs. The spinal curvature can also make it difficult to cause upward or drive and can cause pain when you lie down. तीसरा digestive problems हैं. Basically the severe kyphosis can compress the digestive tract, causing problems such as acidic reflux and difficulty with swelling. Swelling, निगलने के अंदर मसाइल आते हैं. The fourth one is body image problem. People with kyphosis, especially adolescents, may develop a poor body image from having a round back or from wearing a brace to correct the condition. For older people, poor body image can lead to a social isolation. बहुत सारे मसाइल आते हैं और सबसे बड़ा इशू जो तक सोशल आइसोलेशन का जो है वो बायस बनते हैं. Now finally we have to discuss about the treatment. My dear students, we have not to tackle these students, these individuals medically, but it is just for your information that the treatment of these things are possible or not. Very simple and very shortly, my dear students, basically the purpose of the treatment is not to stop this, basically is to stop the progression of the curve. हम कर्व को बढ़ने से रोक सकते हैं और जो बॉडी शेप डिस्टर्ब होती है उसको मैनेज कर सकते हैं. और दूसरा ये है कि बाकी बहुत ये बेसिकली एक ऑर्थोपेडिक का काम है, वो बहुत ज़्यादा इसके हवाले से अपनी बातें कर सकता है, बट हमारे पास जो वो 4 चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं. वन इज योर चाइल्ड एज एंड ओवरऑल हेल्थ, द नंबर ऑफ रिमेनिंग ग्रोइंग ईयर्स एंड द टाइप ऑफ kyphosis एंड द सिवियरिटी ऑफ द कर्व. ये पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं कि ये हमारे पास इस तरह की चीज़ें और इसकी कितनी टाइप्स हैं, सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, और इनके अंदर जो रेंज है और इनकी टाइप्स हमने डिस्कस कर दी है कि कौन सी टाइप और उसके अंदर कितने % चांसेस हैं उसको बेहतर होने के. तो इसके ट्रीटमेंट 2 तरह के होते हैं, एक नॉन सर्जिकल होता है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है. तो फर्स्ट वन इज द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास जो चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपसे शेयर किए देता हूँ. नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास जो है, this is the recommended for patient with postural kyphosis. It is also recommended for patients with Scheuermann kyphosis who have curve of the less than 75 degree.
उन लोगों के लिए जो है वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो है वो किया जा सकता है। अब इसके लिए जो हमारे पास इसमें चीज़ें शामिल है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन शामिल है, फिजिकल थेरेपी है और नॉन स्टीरियोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं और ब्रेसिंग है जो की जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी है जो कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ द सर्जिकल ट्रीटमेंट, surgery is often recommended for patients with congenital kyphosis, and surgery may also recommended for the patients with Scotman kyphosis who have a curve greater than 75 degree, and the second one is the reason for those patients with severe back pain that does not improve with non-surgical treatment. So basically these are the issues, and that can be done with the two types of the treatments. One is the non-surgical and other one is the surgical treatment. And the spinal fusion is also the surgical procedure most commonly used to treat the kyphosis, and that have the four objectives. Number one is reduce the degree of the curve, prevent any further progression, maintain the improvement over time, and alleviate significant back pain if it is present. So these are basically the major issues. So thank you very much, my dear students. This is over to you, and if you will feel any question, any query, and I will be available at the ISP portal or Sunday इंशाल्लाह. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप खैरियत से रहें. इंशाल्लाह. See you then. Thank you very much.